येरादारी घेवपी आडमेळी पयस करपाचो थाराव घेतलो आनी तेचे रुपांतर मारामारीत आनी गुंडागर्दीत जालें. कोलवाची ही घडणूक स्पा ऑनर शर्मान विशाल अग्रवालाक त्याच बरोबर एका कामगाराक मारबडे केली अशी कागाळ कोलवा पुलिशेंत नोंद जाल्या. विशाल अग्रवालान कोलवा पुलिशेंत ही कागाळ केल्या. काय मारलो अबय हाका हाजेर लेबर ताका मारलो आनी ताका तो काम करता आपले ताजेर हात उबारप इज नॉट करेक्ट. कोलवाचे कर्ले रिव्हर विलेजची ही घडणूक. रहिवासी सोसायटीत येरादारी खातीर येवपी आडमेळ्यांक घेवन एक थाराव पास जालो. त्या उपरांत तूं मय जालें. त्या उपरांत खंय एका स्पाचो ओनर शर्मान मारामारी केली. ते संबंदात विशाल अग्रवालान कोलवा पुलिशेंत कागाळ केल्या. आयकात कालेचे कार्ले रिव्हर विलेज सोसायटीचो मेंबर आदित्य प्रभुगांवकार आणि पिडेस्त विशाल अग्रवालाक. हम लोग काले सोसाइटी में काले रिवर विलेज सोसाइटी में रहते हैं, वहीं के मेंबर्स हैं हम सारे. वहाँ पे हमने एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया था, सोसाइटी रेजोल्यूशन पास किया था कि वहाँ के जो फुटपाथ पे उन्होंने इलीगल स्ट्रक्चर बना रखा, कंस्ट्रक्शन कर रखा हुआ था, वो हटवा के क्लीनिंग करवाने का, जिससे वहाँ पे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड निकल सके. जो पीछे एक बार दिक्कत आई भी थी सोसाइटी में, वो हटवाने के बाद राजीव शर्मा ने अपने घर के सामने उसका हटवाया तो उसने बाहर से गुंडे बुला लिए और मारपीट की और मेरा फोन तोड़ दिया, पूरा नया फोन पूरा तोड़ दिया उसने. और इसके बाद लेबर को भी मारा, वहाँ पे लेबर को भी पूरा मारा है. गेट बंद कर दिया, उसने बाहर से जो गुंडे बुलाए उन्होंने कार से ला के पूरा सोसाइटी का गेट बंद कर दिया. ना कोई कार बाहर से अंदर आ सकती थी, ना अंदर से बाहर जा सकती थी. जब मैं उससे मिलने गया कि क्या हुआ, क्यों कर रहा, तो उसने मुझे फिजिकली असॉल्ट करा और मेरा फोन तोड़ दिया और मेरे पीछे रॉड लेके मारने के लिए दौड़ा था वो. ये कंप्लेन मैं पुलिस स्टेशन देने आया हूँ. आम्ही काल्ले सोसायटीन सगळीं एक बरोबर रावता. आमचे काल्ले सोसायटीन हिंदू आसा, तुगेले नॉर्थ इंडियन्स जशे विशाल भाई अगरवाल हे ख्रिश्चन कम्युनिटी आसा. आमी केन्नाच एक रिलीजन आनी हे पळोवना. आमी सदांच एकजूट रावन थंय सदांच सोसायटीन रावतात. आमी एकामेकाक पावतात आनी एकामेकाक सपोर्ट करतात. आतां जेन्ना अश्यो गोश्टी घडटात की कोणाले एक रेजोल्युशन पास जाता सोसायटी. आज कितें आसा, आमची काल्ले सोसायटी कार्ले रिव्हर विले इज अ मेंटेनन्स सोसायटी. हांगा प्रत्येकाचें कर्तव्य आसता की आपले जे ड्यूज आसा ते येवन पे करपाचे फुडें घेवन. हांगा कोणाक सांगपाक पडूं जायना की बाबा तुजे पयशे दी हांगा हे बिकॉज कोणा कडेन टायम ना. सगळे आमचो सेक्रेटरी आसा, आमचो प्रेसिडेंट आसा, जावं आमचो ट्रेजरर आसा, तांकां स्वताची कामां आसा. दीस इज अ वॉलंटरी सर्वीस वॉट वी आर डुईंग. सो आमचे मिटिंगेन जेन्ना जाता तेन्ना जर तर खंयच्याय लोकांक जर तर प्रॉब्लेम आसा जावं इश्यूज आसा, तांणी ती मिटींग अटेंड करपाची गरज आसता. बिकॉज कितें आसा, जे घडामोडी जातात जावं वॉट एवर डिसिजन्स आर टेकन, दोज आर टेकन इन द मिटींग. बट इफ यू आर नॉट ट्रायंग टू बी अ पार्ट ऑफ दॅट मिटींग and you are just trying to neglect the meetings, then that is not a solution. So जे लोक असता, एक 15 लोक, 15 फॅमिली, 15 मेंबर किंवा 20 मेंबर, 25 मेंबर, ते मेळून एक कलेक्टिव्ह डिसिजन घेता. सो आम्ही एक कलेक्टिव्ह डिसिजन घेतले बिकॉज आमच्या सोसायटीन रिसेंटली एक मेजर प्रॉब्लेम जाल्लो. एक पार्टी चालू आशिल्ली एक आमच्या मेंबराच्या घरा आनी थंय एमर्जन्सी जाली. सो गाडयो लायिल्ल्या कारणान, ताजे गेस्ट आशिल्ल्या कारणान आमकां थंय एम्ब्युलन्स पास जाली ना. सो थंय इश्यू जालो. बट लकीली ताका काय त्या बायलेक कांयच जालें ना आनी ती लकीली सेव जाली देवाचे कृपेन, दाम बाबाचे कृपेन. म्हणून हाजेर आमी एक डिसिजन घेतलें की आमकां हो रोड जो आसा तो क्लियर करपाक जाय. आतां रोड क्लियर करतलो जाल्यार ताचेर जे भायर लोकांनी झाडां लायल्या ती कापपाची गरज आशिल्ली. ताका लागून आमी रेजोल्युशन घेतलें की जी भायली झाडां आसा, जी तुज्या घराच्या भायर, खंयच्याय मनशाच्या घराच्या भायर जी आसा ती आमी कट करतले म्हणून. सो ताजे वयल्यान हे आज आमी हे डिसिजन घेतलें आनी आमी एक JCB आपयलो आनी आमचे सेक्रेटरी आनी आमचे मॅनेजिंग कमिटीन हे डिसिजन घेतलें आनी फुडें चल्ले. सो आमचो एक मेंबर आशिल्लो, ताका प्रॉब्लेम आशिल्लो हातूंत आनी ताणें हो व्हडलो इश्यू केलो. आनी इश्यू म्हणल्यार कितें आसा, आज आमी कार्लेन कशें रावता, एज अ फॅमिली रावता. बट म्हाका दिसता की सोसायटी इज वन फॉर अँड ऑल फॉर वन. आमी भायल्या लोकांक हाडून गुंडागर्दी करप आनी दादागिरी करप इज नॉट अ सोल्युशन. आमी बरोबर बसून मिटिंगेन
सोल्युशन काडूं जाय. सो हें जालें ना. आमचो विशाल भाई ताजेर मातशे धक्काबुक्की जाली, ताजेर रॉड घेवन आयलो मारपाक. दिस इज व्हाट ही इज सेइंग इज राइट कि सोल्यूशन निकालना है. वी आर ऑल फैमिली हियर. वी हैव टू Yeah. रिमूव अ सोल्यूशन. वी आर नॉट अगेंस्ट एनीबडी. आमकां But सगळे बरोबर solution. जाय, आमकां सगळे बरोबर जाय आनी आमी सगळ्यांक वेलकम करतात. पण अशें जर तर जावपाक लागले आनी जर तर भायले लोक जर तर येवन जर तर गुंडागर्दी करपाक लागले इन अ प्रेस्टिजियस सोसायटी ऑफ मारगांव, देन इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. Society is very, it's a maintenance society. Different people from different religions stay here and it's a family. There is no issues at all. Whatever the society decides has to be compiled by each and everybody. But unfortunately, that is a secondary issue. जो भी हुआ, you need to understand one very simple thing कि आप बाहर से लोग नहीं ला सकते हमारी सोसाइटी में. It is not allowed. You cannot bring outsiders in our society. आप बाहर से आप आकर के मेरे किसी भी कलीग, किसी भी मेंबर के हाथ से मोबाइल लेकर के नहीं तोड़ सकते. You cannot pick up a डंडा और समथिंग लाइक दिस स्टिक एंड ट्राई टू हिट समवन. अगर कुछ भी प्रॉब्लम है सोसाइटी में, प्लीज अंडरस्टैंड it's a family. We are living here. We all are family. Come and speak. Let us understand. Let us not abuse anybody. Let us not hit anybody. And you cannot just come with 20 people or anybody, any amount of people and close the main gate कि कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई अंदर नहीं जा सकता. This has to be done by the society, not by an individual. We need to understand. You cannot assault anybody, my dear friends.